Good afternoon, students. Good afternoon. So please confirm that the voice is clear. Please confirm, everybody. Please confirm that the voice is audible and the screen is properly visible to you all. हाँ हमने तो बंद करा Okay, so I think everything is fine, right? Is the screen visible and audible? I'm audible to you? All okay? Please give me thumbs up. Okay, okay. Thank you so much. Good afternoon, Akansha, Aman. So we'll start with today's lecture, okay? So this is lecture number 8 of ARD, and the topic that we are going to cover today is cropping system and cropping pattern. Cropping system and cropping pattern. Okay, I hope everything is fine and we can continue. Okay, let's proceed. So we have already covered lectures on farming system and basics of agriculture. I hope you have already watched those lectures. So today we are covering topic cropping system and cropping pattern, yet again important topic for your examination. Okay, so guys, if you have any difficulty or if you want to ask anything, you can ask me in the comment section, but we'll cover this through question format, and I want all of you to answer, all of you to participate, right? So here's the first question for you all. Which cropping pattern involves growing only one crop in a particular field during one season? So you have to tell me in which cropping pattern we are growing only one crop in a season at a particular time. What will be the answer? Your options are multiple cropping, intercropping, monocropping, sequential cropping, ratoon cropping. क्या होगा आंसर इसका? Anybody? Anybody? Very good. I can see right answers coming. It will be monocropping, right? It will be monocropping. So students, before proceeding ahead, I would like to explain you here, what do you understand? What do we understand by cropping pattern? Okay, so students, यहाँ पे हम लोग चीजों को बहुत ही short में cover कर रहे हैं. We are covering only the question part. Rest, if you want the detailed video of cropping pattern, we have already provided you the link in the description box for ARD simplified video on cropping pattern. You can watch it for detailed explanation. But I'll brief you here. Cropping pattern is the pattern in which we are growing crop. Okay, जिस pattern में हम crop को grow कर रहे हैं agriculture land में, उसे cropping pattern कहा जाता है, right? Like for say, we are adopting rice wheat cropping pattern, और we are adopting rice wheat pulses cropping pattern. तो ये एक pattern में हम crop को grow कर रहे हैं. This is cropping pattern. Now this cropping pattern can be of different types. Okay, it can be of different types. One is monocropping. Monocropping. So students, what is monocropping? When the entire land is covered with only single type of crop. Okay, only single type of crop you are growing in a particular season, or season after season, or year after year. That is monocropping. Okay, monocropping means one crop. One crop. If you are not following any cropping pattern, you are not changing your crop. You have a pattern like you are growing rice, right? But you are taking crop, but you are not changing any crop. The crop is same, which is rice. So that will be monocropping. Next we have is intercropping. Okay, next we have is intercropping. Now students, what is intercropping? It is growing of more than two or more than two crops at a time. ठीक है? When we grow two or more than two crops at a time, that is called intercropping. And intercropping can be of different types, like we have mixed intercropping. In case of mixed intercropping, what is done? We are not following any definite row arrangement. We are just
mixing seed of all the crop that we want to grow, and just without following any definite arrangement or any pattern, we are growing crop. So we have mixed the crop. Basically there is no line pattern that we have followed, or not any particular area is dedicated to one particular crop. No pattern has been followed. That is called mixed cropping. Okay, next we have is row intercropping. What do we understand by row intercropping? So in mixed cropping we are not following any definite pattern, but in row intercropping we are sowing these crops in rows. Okay, we are following row pattern of sowing crop. So in different rows we grow different crops, right? Two or more than two crops are grown in row pattern. Then we have strip intercropping. So student, modified form of row cropping is strip intercropping, where what we do not go for single row of one crop, rather we go for multiple rows of single crop. So see, in row intercropping what is there? Ki row intercropping mein like there is two crops. So one row of this crop and one row of this crop is there, right? So this is your row intercropping. But if I talk about strip intercropping, in strip intercropping what we do, we form strip of one crop, like 3 rows of one crop is made first. Okay, so this forms a strip. This strip is formed of row of crop 1. For the next crop again we will make a strip. Okay, so this is strip of other crop. So this is strip intercropping, this is row intercropping. ठीक है, इसका ही modified version है strip intercropping. Clear? Next we have is relay intercropping. So students, relay is basically when we are sowing seed of coming crop or the preceding crop before the when we are sowing the seed of succeeding crop before harvesting of preceding one. ठीक है, पहले जो already crop फील्ड में लगी है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही हम सीड सो कर लेते हैं ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, आने वाली क्रॉप का. ठीक है, सो दिस इज डन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, दिस इज डन टू यूटिलाइज द सॉइल मॉइस्चर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फील्ड, क्योंकि आपकी जो क्रॉप है ऑलरेडी इन द फील्ड वो अब मेच्योरिटी स्टेज पे आ गई है. विद इन 10-15 डेज यू आर अबाउट टू हार्वेस्ट दैट क्रॉप. अब क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, सो उस वाटर को जो दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सॉइल कैन बी यूटिलाइज्ड एंड वी कैन जस्ट sow seed of any other crop and that seed can utilize that water for germination. Clear? So I hope now what is cropping pattern and different type of cropping patterns are clear. Now I want everybody to participate and we will solve further question based on this topic. First is the rice wheat cropping system is most prevalent in which Indian state? Okay, what will be the answer of this question? कहाँ पे rice wheat cropping system ज़्यादा follow किया जाता है? Your options are Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, गुजरात, राजस्थान, एमपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड. कहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलता है कि राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है? What will be the answer? Quickly give me the answer, please. So yes, answer will be option B, which is Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, right? So mostly in this part of our country, rice wheat intercropping system or cropping system is followed, right? Next is relay cropping in rice is also known as, okay? What is the other name of relay cropping? Your options are given: para-utera cropping, mixed varietal cropping, row intercropping, fallow cropping or intensive cropping. What will be the answer? I think we have discussed relay cropping yesterday also in the yesterday's class. So now you should be able to give the answer of this particular question. ठीक है? So what is the other name of relay intercropping? Relay, I hope it is clear to you. Relay आपका एग्जाम में पूछा भी गया है. There is one previous year question, not one, it is 1 to 2 times it was asked in your examination. So you should know about relay cropping pattern. Okay, it is very good. Everybody has given the right answer. Para and utera cropping system. So students, the para and utera cropping pattern is the another name of relay cropping. ठीक है? Relay बोलो या पेरा बोलो, उटेरा बोलो, that is the same thing. Okay, clear? Next question is, which crop is commonly ratooned in India? Okay, so this is talking about the ratooning process. I am going to tell you what is ratooning, but you have to first tell me which crop is ratooned in India. Okay, options are maize, sugarcane,
wheat, mustard, potato. Very good. I can see right answers in the chat section. रटूनिंग ज्यादातर किस क्रॉप में फॉलो की जाती है इंडिया में? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड रटून क्रॉप्स क्या होती है या रटूनिंग क्या होती है. ठीक है. व्हाट इज रटूनिंग? So basically student, ratooning is a process where we do not go for sowing of seed or any other planting material. Here what is done, आपका this is a crop which is already standing on field, right? Now this crop has come to the harvesting stage. What you will do, you will not cut the crop from the base, rather you will cut the crop from here. Okay, some part of the plant will be left in the field. Okay, some part of the plant will be left in the field and you will cut the crop from here. Now what is done, irrigation is provided to this crop. Now we will have field just with the plant part that we have left. Okay, then what we'll do, we will give irrigation. Now this plant part which is left on the field, okay, this is roots. So this plant part which is left on the field, it will start sprouting. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, sprouting होने लगेगी. It will start sprouting and it will form new plant. Right? So this type of crop, when we are using plant part for the coming crop, that is ratooning. Okay, we are not using seed, we are not using any additional planting material. Whatever plants we have grown in the previous season, the part of that plant is kept in the field, allowed to sprout and give us new crop. Clear? So answer here for this question will be sugarcane. So students, usually in India for sugarcane, ratooning is adopted. Okay, this practice is adopted mostly for sugarcane. So sugarcane will be the example here. Okay, moving to the next question. Multi-storied cropping usually combines crop of. Okay, so in multi-storied cropping pattern, what kind of crops are combined? So options are same height and duration, different heights grown together, crop requiring fallow land, crops requiring high mechanization, or crops dependent on only rainfall. What will be the answer? Multi-storied cropping system में what kind of crops are combined? Okay, so ठीक है, you guys give me the answer in the chat section, and by then I'll explain you what is the meaning of multi-story cropping system. So usually students, what we do, we utilize the horizontal space of the field. ठीक है, so usually crop of same height is grown together on the field, right, at a particular point. But in multi-story cropping system, what we need to do, the concept is to utilize the vertical space. Okay, concept is to utilize the vertical space. So here what we do, we mix crop of different height. ठीक है, crop of having tall height are grown, then below these crop medium height trees will be or crops will be grown, then short height, and then small your vegetables and shrubs and herbs can be grown. Okay, so you can see what we have done on the same piece of land, we have utilized the vertical height of crop. Okay, and crop of different heights are grown together. Okay, so by doing this, what we are doing, we are efficiently utilizing the field. Okay, now big plants like coconut is there, right? So coconut plantation is there. So there you will find that distance between two coconut tree is very wide, right? So this area which is between two coconut tree can be utilized for growing other crops which are of short height than coconut tree, and the ground can be utilized for growing some vegetable like ginger or turmeric, right? So here what we are doing, basically we are utilizing the vertical space and we are growing crops of different height together, right? So option B will be the right answer. Also students, we need to take care one thing
here that we will grow plants that love shade, because you cannot these plants will not able to grow if they need sunlight, because already the shade will be there. So shade loving plants are grown at the base level and then the other plants are grown. Clear? Clear? Very good. Very good. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रॉप रोटेशन. ठीक है, क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो योर ऑप्शंस आर लीड्स टू सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, reduces insect and pest control, helps in maintaining soil fertility and control weeds, reduce soil fertility, increase dependency on synthetic fertilizer. You have to tell me the correct one. Okay, which is correct options regarding which one of the correct option regarding crop rotation? Okay, Sugandha, yes. Multi-story is also known as multi-tier cropping system. Very good. Okay, answer will be option C, right? It helps in maintaining soil fertility and control weed. I have told you yesterday also कि crop rotation क्या है? Rotation of crops in a fixed pattern over a piece of land. Why we are rotating the crop? Because in order to maintain soil fertility. ठीक है? So other important benefit of crop rotation is that it helps in controlling weed and pest. ठीक है, अगर हम और ऑप्शंस देखें, इट लीड टू सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, इट विल बी रॉन्ग बिकॉज क्रॉप रोटेशन से सॉइल न्यूट्रिएंट इंक्रीज करता है. रिड्यूस इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल. ओके, सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिड्यूस इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड कंट्रोल वीड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी इज इनकरेक्ट. इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, देन इट विल बी राइट. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही थे इफ इट इज सेइंग रिड्यूस इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल. क्लियर? सो दोनों ही ऑप्शन सही थे. yes, very good Isha Raj. B was also correct option. So just corrected, it is increase in pest and control, then answer will be option C. Rest, yes, here option B and C both were correct. ठीक है, so I have corrected it and now I hope it is clear to you all. Clear? चलो, next question is which of the following is not an advantage of multi-storied cropping system? We have discussed what is multi-storied or multi-tier cropping system. Now you have to tell me इसमें से क्या advantages नहीं हो सकता है. Your options is better utilization of light, sunlight, water, nutrient, ecological stability, yield stability, easy mechanization, flow of income. Okay, so क्या advantage नहीं होगा multi-storied cropping system का? Please give me the answer. ओके धर्मेंद्र, अगर आपको लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है तो बाय टुडे इट विल बी अपलोडेड. ठीक है, आज अपलोड हो जाएंगी, यू विल गेट इट ऑन टेलीग्राम. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. आंसर विल बी ऑप्शन डी, इजी मैकेनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि व्हेन वी आर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन अ सेम एरिया, मैकेनाइजेशन विल नॉट बी इजी, right? Because height of crop is different. So mechanization easy नहीं होगा, difficulty होगी mechanization में. Rest if we see other options, they are true or they are correct. They can be called as advantages of multi-storied cropping system. ठीक है? Okay. Moving to the next question, which statement about lay farming is correct? Okay. Lay farming के regarding question है. Options is it reduces fodder production, it restores soil organic matter, it increases drainage losses, it prevents livestock efficiency, it increases weed. Okay, you have to tell me the correct one. Okay, what will be the right answer here regarding lay farming? ठीक है, lay farming के लिए कौन सा statement correct है? Carefully read all the option. Carefully read all the option. Very good.
Very good. Now you guys are giving right answer. That is option B. That it helps in restoring the soil organic matter. ठीक है. Lay farming की अगर हम बात करें तो we have discussed lay farming क्या होती है, where we are growing grasses और combination of crops जैसे कि grasses, legumes और grasses, cereals that are grown in order to conserve soil and water. Also, these crops which are grown in lay farming can be used for feeding livestock. ठीक है. तो students see, it reduces fodder production will be wrong, because here fodder production will increase because we are using these crop for feeding livestock. ठीक है. It restore soil organic matter, yes, because all the organic matter, more more the grasses is grown over the piece of land, more will be the addition of organic matter. तो organic matter बढ़ेगा, कम नहीं होगा. ठीक है. So restore करता है, yes, that is correct. It increases drainage loss. No students, rather it reduces drainage losses. ठीक है. ये आपके soil को protect करता है and also drainage losses को कम करता है. It prevents livestock efficiency. That is also correct, because it increases livestock efficiency, because here we are getting a source of fodder for livestock. ठीक है. It increases weed. No, it will decrease the weed infestation. Clear? चलो. Okay, running slow. Lay farming, I have told you, when we grow grasses or grasses and legumes or any combination of crops, okay, for the purpose क्या है यहाँ पे, soil and water conservation. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करना, एंड दिस ग्रासेस और क्रॉप्स दे आर यूज्ड फॉर फीडिंग लाइवस्टॉक. ठीक है. फीडिंग लाइवस्टॉक. दिस इज योर lay farming. This is your lay farming. Clear? I hope it is clear. Moving to the next question about, consider the following about intercropping. Okay, which one is correct? You have to tell me. It involves growing 2 or more crops simultaneously. Strip intercropping involves wide strip for independent cultivation. Relay intercropping means sowing the next crop after harvest of first. ठीक है, आपको correct बताना है regarding intercropping. Okay. What will be the answer for this question? Anybody with the right answer? देखो, रिले क्रॉप हमने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रिप हमने कवर कर लिया है, वी हैव आल्सो कवर्ड कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है. ओके, वेरी गुड. आंसर विल बी ऑप्शन ए. ठीक है. Answer will be option A, 1 and 2. See students, intercropping I have already discussed that it involves growing of 2 or more crops simultaneously. When we are simultaneously growing 2 or more crops together, that is intercropping. So this statement is correct, right? If I talk about strip intercropping here, it involves wide strip of for independent cultivation. Yes, देखो, I have told you ना, the modified version of row intercropping was strip intercropping. So strip intercropping में what we were doing, we were making a broad strip of one crop. ठीक है. दो या दो से ज्यादा क्रॉप होंगी, बट वो स्ट्रिप्स में ग्रो करेंगी. ठीक है. Why this is done? Because here what we can do, we can do the independent cultivation of each crop. अब ये देखो, यहाँ पे क्या होगा, आप इस क्रॉप को अलग से मैनेज कर सकते हो, इस क्रॉप को अलग से मैनेज कर सकते हो. ठीक है. सो अगर ये मेथड होगा, that is row method, so what is there will be difficulty in managing the each crop individually, but strip crop में ये advantage होता है कि आप उसको manage कर सकते हो easily. ठीक है. So and coming to the third statement, relay intercropping means sowing the crop after harvest of first. No, before harvest of first. ठीक है. Before harvest of first. That's why it's incorrect. It's incorrect. Clear? Moving to the next question, identify correct feature of ratoon cropping. Okay, we have also discussed ratoon. So now you have to identify the correct feature of ratoon cropping. Fresh crop from stubble suckers, require replanting, save time and cost. Example, sugarcane. What will be the answer of this question? Please quickly give me the answers in the comment section. I have already discussed ratoon with you.
क्या आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड, आई कैन सी राइट आंसर्स कमिंग. सो स्टूडेंट्स हियर आंसर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी. सो स्टूडेंट देखो, लेट अस सी, रटून क्रॉपिंग हमने समझ लिया, रटून क्रॉपिंग क्या होता है, राइट? अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फ्रेश क्रॉप फ्रॉम स्टबल्स और सकर्स. यस, I have told you already, we are using part of plant, okay, which is previously present on the field. So either any stubble or sucker is also again a part of plant, okay, that is left over the field and it is allowed to grow. Clear? So here this statement is correct. Requires replanting, then no. I have already told you in ratoon cropping, replanting is not required. Whatever we have grown in the previous season will be used as planting material for the coming season also. Then it saves time and cost. Yes, it does save your time and cost of labor of replanting the crop. Clear? Then example is sugarcane. Yes, example is sugarcane of ratoon cropping, which we have already discussed. Clear? So I hope this question is also clear to all. Moving to the next. Consider the following on wheat based cropping system. ठीक है, you have to tell me okay, you have to first please read these statements. Okay, you have to tell me the incorrect one. Okay, tell me the incorrect or the correct one. ठीक है, आप पहले मुझे correct one बताओ कि कौन से correct statement से regarding wheat based cropping system के लिए. Okay, very good. Answers are coming. It will be option A, 1 and 2. ठीक है. So regarding wheat based cropping system, the correct statement is 1 and 2. So rice wheat system is one of the major cropping system followed in India. It is majorly followed in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. We have already discussed this in the previous question, right? So wheat maize is a most important rotation. No students, it is not a very important rotation. ठीक है. So ये नहीं follow किया जाता है, इसलिए answer 1 होगा ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. नाउ सच क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर फेज 2. ठीक है, तो प्रैक्टिस करो all type of questions. So now this question says a farming practice involves growing grasses and legumes alternatively with green crops. This method improves soil fertility by fixing nitrogen, prevent erosion and provide fodder for livestock. ठीक है, however it require heavy investment and time and improper seed preparation may cause failure. ठीक है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई किसके बारे में बात हो रही है. तो समटाइम्स आपको जो क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके भी दे दिया जाता है, राइट? सो यू नीड टू केयरफुली रीड द statements that are provided to you and accordingly choose the best option from the best answer from the options. ठीक है, सो प्लीज केयरफुली रीड करो क्योंकि एग्रीकल्चर में यू विल फाइंड द डिफरेंट डेफिनेशन फॉर ईच थिंग. ठीक है, हर टर्म की आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएगी, हर टर्म को डिफरेंटली डिफाइन किया जाएगा. ठीक है, हर साइंटिस्ट अपने तरीके से हर प्रैक्टिस को देखता है, तो इसीलिए हर किसी के लिए डेफिनेशन दूसरी हो सकती है. ठीक है, तो अब आपको आंसर करना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट दिस. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ग्रासेस और लेग्यूम्स हम कब ग्रो करते हैं, या फिर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स विच कैन बी योर सीरियल क्रॉप्स. और इससे क्या होता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, राइट? सॉइल इरोजन कम होता है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट थिंग दैट हमारे जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए फॉडर भी मिल रहा है. तो हमने ये डिस्कस किया था ले फार्मिंग के रिगार्डिंग, तो आंसर विल बी ले फार्मिंग. ठीक है, आंसर विल बी ले फार्मिंग. वेरी गुड, आई कैन सी ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. गुड, ओके. So now again question based on same paragraph. ठीक है, the paragraph was same. Next question is regarding the lay farming, which of the following is an advantage of above system. ठीक है, जो हमने सिस्टम पढ़ा उसका क्या एडवांटेज है? Deplete nitrogen from soil, improve livestock nutrition, increase soil erosion, reduce organic matter, decrease crop yield. ठीक है, अब ये उसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है. तो यू हैव टू टेल मी नाउ कि अब जो ये सिस्टम हमने पढ़ा है इसका एडवांटेज क्या है. केयरफुली रीड द ऑप्शन एंड गिव मी आंसर्स. वेरी गुड, आई कैन सी राइट आंसर्स कमिंग. निहारिका,
सौरभ, ईशा, संगमित्रा, विशाल, अमन, एक बार फिर ऑप्शन पढ़िए। आकांक्षा, प्लीज रीड ऑप्शंस वंस अगेन। ठीक है, वेरी गुड आकाश। कलाम, लर्निंग सोल, very good Vishal, now you have given the right answer. Rahul, Sugandha and Akansha, good, very good, all of you have given the right answer now. So it is option B, it improve livestock nutrition. ठीक है, कैसे करता है, I've already told you regarding this. Moving to the next question, which system ensure best utilization of residual fertility from rice field? ठीक है, option you see here you have to focus on this term residual fertility or residual moisture. It can be also residual fertility and moisture. ठीक है, चलो, now give me the answer. Relay cropping, strip cropping, intercropping, monocropping, multi level cropping और lay farming. क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? Okay, answer will be sorry guys, it will be option A, relay cropping. ठीक है, relay cropping आंसर होगा. Sorry for the mistake. देखो यहाँ पे क्या है, residual fertility और moisture की बात हो रही है. तो relay cropping में what we do, we have a rice field. ठीक है, हमारे पास rice field है. ठीक है, अब इस राइस फील्ड में हमने फर्टिलाइजर डाले होंगे, इरिगेशन दिया होगा, राइट. अब ये राइस आ गई है एट अ पॉइंट ऑफ मेच्योरिटी. अब ये राइस मेच्योर हो गई है एंड विद इन 10 to 15 days वी आर अबाउट टू हार्वेस्ट दिस राइस. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, to in order to utilize nutrient that is already present in the rice field as well as moisture that is present in the rice field, we go for growing next crop. ठीक है, we go for growing next crop. तो इसके बीच में ही हम लेथाइरस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो क्रॉप एज अ रिले क्रॉप ग्रो की जाती है विद राइस. ठीक है, तो यहाँ हम इसके बीच में ही seeds of लेथाइरस we will scatter and we will allow लेथाइरस to germinate. जब तक आपकी हार्वेस्टिंग होती है, लेथाइरस के plants will germinate and you will see the crop has already established in field. ठीक है, so this will be the relay cropping. This will be the relay cropping. Yes, relay cropping will be the answer. Okay, so I have corrected here. It will be the relay cropping, not the strip intercropping. I hope it's clear now. It's clear, right? Any confusion, please let me know in the comment section. Okay, next question for you is the cropping intensity of an area is calculated as. Cropping intensity कैसे calculate करते हैं? What will be the answer? Okay, Mayank Saxena, see, I have already covered the detailed lecture in ARD Simplified series. You will get the link of that detailed lecture in the description. Okay, you can cover this lecture in detail from there. So yes, right answer will be right answer will be option A. Okay, so gross cropped area upon net sown area into 100. ठीक है, so students let me explain कैसे calculate किया जाता है. So we have area of around, ठीक है, एक farmer है, उसके पास है area of around 8 hectare. ठीक है, 1 hectare का area है. Now अब within 1 year farmer has taken 2 crops. ठीक है, राइस ली है खरीफ में और wheat ली है रबी सीजन में. ठीक है, ये 2 सीजन उसने यूटिलाइज किए by taking 2 crops. What this farmer does, this farmer sow rice in 5 hectare area. Okay, like for say it has sown the rice in entire 8 hectare. ठीक है, इन्होंने पूरा entire 1 hectare को यूटिलाइज किया for sowing the rice. But wheat के लिए और एक और क्रॉप ले लेते हैं जायद सीजन की क्रॉप which is any pulses. ठीक है, 3 क्रॉप ली है within 1 agriculture year. ठीक है, तो 8 हेक्टेयर में इन्होंने सो किया राइस, 5 हेक्टेयर में he has sown wheat. ठीक है, and only in 3 hectare he has sown the pulses. ठीक है, तो this is how he has utilized his land for sowing different crop within 1 year.
and we need to calculate the cropping intensity of this farm. Okay, cropping intensity of this field. So if we calculate the gross cropped area, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन केस ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वी विल एड द एंटायर लैंड दैट इज यूज्ड फॉर सोइंग डिफरेंट क्रॉप. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना आ गया? 16 हेक्टेयर. राइट, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 16 हेक्टेयर. क्लियर? क्लियर. सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज 16 हेक्टेयर. बट इफ आई टॉक अबाउट नेट एरिया, तो नेट एरिया तो फार्मर का 8 हेक्टेयर ही है ना. ऐसा तो है नहीं कि उसकी जमीन बढ़ गई है. राइट, ऐसा तो नहीं 8 से 16 हेक्टेयर हो गई है. एक्चुअल जमीन कितनी है? 8 हेक्टेयर ही है, बट उसने 8 हेक्टेयर को कैसे यूटिलाइज किया है, दैट इज योर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, तो उससे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को निकालते हैं. तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इस फार्म की? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 16, नेट इज 8 इंटू 100. तो 200% इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्म. ठीक है, तो इसी तरीके से क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाली जाती है. ओके, नाउ वील सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर इन विच क्रॉप आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर फिक्स पीरियड इज कॉल्ड. ये 2017 का NABARD Grade A का क्वेश्चन है. प्लीज गिव मी द आंसर. मयंक, देखो मैंने क्या कहा, नेट सोन एरिया, नेट एरिया तो 8 हेक्टेयर ही है. राइट, बट अब ये जो 8 हेक्टेयर है इसमें उन्होंने 3 क्रॉप ग्रो की है, खरीफ, रबी और जायद सीजन में. ठीक है, खरीफ में उन्होंने 5 हेक्टेयर में ही राइस लगाया. ठीक है, जायद सीजन नहीं सॉरी, खरीफ में 8 हेक्टेयर में राइस लगाया था, रबी में 5 हेक्टेयर में वीट लगाया था, और जायद सीजन में सिर्फ 3 हेक्टेयर में ही उन्होंने, फार्मर ने क्या किया है, पल्सेस लगाई हैं. तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि कितने एरिया में टोटल क्रॉप लगी थी. तो वो 8 हेक्टेयर में लगी थी खरीफ सीजन के केस में, 5 इन रबी सीजन, 3 इन जायद सीजन. तो टोटल जो एरिया है वो ग्रॉस एरिया 16 हेक्टेयर हो गया. ठीक है, अरे ग्रॉस का मतलब समझो, ग्रॉस का मतलब समझो, हम उस 8 हेक्टेयर को ही बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, उस 8 हेक्टेयर को ही बार बार ऐड कर रहे हैं. ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि खरीफ सीजन में कितना एरिया पे क्रॉप लगी थी, जायद पे कितनी लगी थी, रबी सीजन में कितनी लगी थी, और उसको ऐड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर हम मल्टीपल क्रॉप ग्रो करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा ना, ग्रॉस एरिया तो बढ़ गया फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि आपने 3 क्रॉप भी तो ली है ना. सो दिस विल बी, सो दैट्स वाई वो ग्रॉस बढ़ जाता है. ग्रॉस कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने एक ही जमीन को यूज किया, बट आपने खरीफ, रबी, जायद 3 क्रॉप्स भी ली हैं. उन 3 क्रॉप के लिए आपको लैंड चाहिए, आप उतने बार उस लैंड को ऐड करोगे तो ग्रॉस बढ़ जाएगा. नेट तो 8 ही है. क्लियर? ओके, सो आंसर फॉर दिस विल बी क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. आई होप यू ऑल हैव सॉल्व्ड दिस बाय नाउ. फर्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप which leaves the root and lower part of the plant and cut to give the stubble crop is known as. ठीक है, so students what will be the answer? Again ये 2017 में पूछा गया है, we have discussed this. ठीक है, okay, if it is solved that's great. क्लियर? सो इसका क्या आंसर होगा? क्विकली गिव मी द आंसर. ठीक है, स्टबल, टू गिव द स्टबल क्रॉप. देखो स्टूडेंट्स, जो आपकी रटून क्रॉप है ना उसको स्टबल क्रॉप भी बोलते हैं. ठीक है, सो हियर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपकी रटून क्रॉपिंग है उसे स्टबल क्रॉपिंग भी कहा जाता है, रीहार्वेस्टिंग भी कहा जाता है, और सेकेंड क्रॉप भी कहा जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट नेम गिवन टू द रटून क्रॉपिंग. सो आंसर विल बी ई, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये आपको याद रखना है. रटून क्रॉपिंग को स्टबल क्रॉपिंग भी कहा जाता है क्योंकि हम प्रीवियस क्रॉप के स्टबल से ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, रीहार्वेस्टिंग कहा जाता है क्योंकि हम दो हार्वेस्टिंग ले लेते हैं एक ही प्लांटिंग मटेरियल से. देन सेकेंड क्रॉप, क्योंकि आपकी ये सेकेंड क्रॉप है, आपने ऑलरेडी एक क्रॉप हार्वेस्ट कर ली है सेम प्लांटिंग मटेरियल से, एंड यू आर गेटिंग द सेकेंड क्रॉप फ्रॉम द सेम प्लांटिंग मटेरियल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंड क्रॉप ऑल्सो. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर हियर. ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, so you have to be ready for this thing also. Okay, rotation of crop means,
अब ये PYQ में भी पूछा गया है, आपके 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था क्रॉप रोटेशन से. नाउ आई हैव डिस्कस क्रॉप रोटेशन सो मेनी टाइम्स. तो अब प्लीज क्विकली गिव मी द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? ओके, वेरी गुड. आंसर विल बी क्रॉप आर चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर अकॉर्डिंग टू प्लांट सीक्वेंस. जब हम क्रॉप को चेंज करते हैं इन अ प्लांट सीक्वेंस ईयर टू ईयर और सीजन आफ्टर सीजन, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. Very good. I can see all of you have given the right answer. Well done. Next question is, which of the following crop is suitable for crop rotation to enrich soil deficiency of nitrogen? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कौन सी क्रॉप, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप हेल्प करती है नाइट्रोजन को एनरिच करने में सॉइल में. ठीक है, सॉइल को नाइट्रोजन टू एड नाइट्रोजन टू सॉइल, सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करने में कौन सी क्रॉप हेल्पफुल होती है? देन गिव मी द आंसर. व्हीट, मेज, अल्फाल्फा, नेपियर ग्रास, नन ऑफ द अबव. ठीक है, आंसर विल बी हियर अल्फाल्फा. ठीक है, अल्फाल्फा स्टूडेंट्स एक लेग्यूमिनस क्रॉप है एंड इट हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हेंस इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल. ठीक है, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the cropping pattern of sugarcane with a short span crop such as potato or onion called that can be harvested even before sugarcane reaches maturity? Okay, this was also one of the PYQ. हमने ये डिस्कस नहीं किया है, but if you know the answer, please give me the answer quickly. Otherwise, I'm going to explain you the answer of this particular question also. Okay, what will be the answer here? ठीक है, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कंपेनियन क्रॉपिंग. ठीक है, अगर नहीं पता है कंपेनियन क्रॉपिंग क्या है, नो वरीज. देखो, कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी गया है. सो व्हाट वी डू, अब हम वी हैव अ लैंड. ठीक है, वी हैव अ लैंड एंड I am a sugarcane farmer for say and I wanted to grow sugarcane on this land. So what I'll do, I will sow the sugarcane. ठीक है, now the distance between two rows of sugarcane will be kept wide enough so that when these sugarcane will come to the maturity, तो उनको enough space मिल सके to grow, right? So there will be wide space between टू शुगरकेन रोज. नाउ जो ये शुगरकेन क्रॉप्स होती है स्टूडेंट्स, इट इज अराउंड 16 to 18 मंथ क्रॉप. इट विल टेक 16 to 18 मंथ टू द हार्वेस्टिंग स्टेज, राइट? अब 16 to 18 मंथ तक आई हैव I am not getting any kind of return from this land. Okay, so my profit will be after 16 to 18 month. So what I can do next thing, that I can utilize the space between the sugarcane rows. ठीक है, इनिशियली तो आपके शुगरकेन ग्रो करेगी तो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली यू कैन गो फॉर ग्रोइंग सम शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे कि पोटैटो, अनियन. ठीक है, सो यू कैन ग्रो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेस बिटवीन द मेन क्रॉप एंड दिस विल हेस्टन द रिटर्न फ्रॉम द लैंड. तो आपको क्या होगा, आपको जो इनकम है पहले वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप से मिलेगी एंड लेटर ऑन जब ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विच इज शुगर केन ये मेच्योर हो जाएगी, आपको उसके बाद फिर दूसरा रिटर्न मिलेगा. तो आपके एक ही लैंड से आपने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न ले लिया है. दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज नोन एज कंपेनियन क्रॉपिंग. ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, आई होप इट इज क्लियर नाउ. नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो. Next question is, which of the following cropping system is highest in India, means which is followed highest in India? Very easy question. I have also discussed this with you. ठीक है, so what will be the answer for this question? Just quickly give me the answers.
ठीक है, what is the answer? Answer will be rice wheat cropping system. ठीक है, I can see all of you have given the right answer. Very good, very good. Rice wheat cropping system. ठीक है, next question. Growing of two or more crops simultaneously on the same field is known as. ठीक है, जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ लगाते हैं किसी फील्ड में, उसको क्या कहते हैं? गिव मी द आंसर. It is called multiple cropping, right? So when we are growing two or more crop, it is called multiple cropping. Students, see, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिवाइड होता है मोनोक्रॉपिंग में और मल्टीपल क्रॉपिंग में. ठीक है, नॉट इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में. पहले आप मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्रॉप्स डिवाइड होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न डिवाइड होता है. सॉरी, मल्टीपल क्रॉपिंग में दो टाइप के आते हैं. एक होता है सीक्वेंस मल्टीपल क्रॉपिंग और एक होता है इंटरक्रॉपिंग. ठीक है, तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट है. मोनो में एक क्रॉप लगाई, मल्टीपल में दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगाई, और ये जो दो और दो से ज्यादा क्रॉप लगती हैं ये एक सीक्वेंस में भी लग सकती है. जैसे राइस व्हीट पल्स, एक सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं. We are utilizing the land for growing two or more crops, but in a planned sequence. वो क्या हो गया? sequenced multiple cropping. But अगर हम एक ही टाइम पे we are utilizing this land for growing multiple crops, then that is called intercropping. Or intercropping, I have told you, it is of different type, like mixed intercropping, row, strip, and relay intercropping. Clear? I hope it is clear. I hope it is clear now, right? Okay, so let's move ahead. In which of the following cropping patterns 4 crops can be grown but one crop is cultivated before the harvest of previous crop? ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है. Now quickly give me the answer. I have repeated this so many times. ठीक है, इसके लिए तो you just don't waste time. Just quickly give me the time so that I can move ahead. क्या होगा इसका आंसर? ओके, देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो. क्रॉपिंग पैटर्न, 4 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बट 1 क्रॉप इज कल्टिवेटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीवियस क्रॉप. डोंट गो फॉर अदर थिंग्स. ठीक है, आपको देखो इंटरक्रॉपिंग में मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बट वो कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न था जहां पे बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप हम क्रॉप को ग्रो कर रहे थे, वो आपने ध्यान रखना है. ठीक है, very good, it will be relay intercropping. Good. Chalo, okay, that was the last PYQ. I hope you have enjoyed the session. So students, now if you want the PDF of this session, Telegram पे आपको PDF मिल जाएगा. And now if you have any doubt, please let me know. And before taking your, please write your doubt. And before taking your doubt, I would like to tell you about our mail ID regarding feedback. ठीक है, I really wanted to know how these classes are going. Were these MCQs useful for you or not? Are you able to revise this ARD completely or not? Please provide this feedback at feedback@edutab.co.in. ठीक है, I haven't received any feedback till now, but yeah, whatever feedback you will give will be forwarded to me. So I wanted to know. Please type your feedback, any kind of feedback. I would like to read your feedbacks, right? Okay, now it's question time. Please give me the please ask your questions and I'll answer them. Okay, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर का डिफरेंस क्या है मयंक? देखो, मोनोक्रॉपिंग इज व्हेन यू आर ग्रोइंग सिंगल क्रॉप सीजन आफ्टर सीजन, ईयर आफ्टर ईयर. बट अगर आप फॉर से आप राइस को उगाते हो फॉर 5-6 ईयर, फॉर कंटिन्यूस 5 to 6 ईयर, सीजन आफ्टर सीजन एंड ईयर आफ्टर ईयर. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रमोटिंग मोनोकल्चर. ओके, आप क्या कर रहे हो? आप मोनोकल्चर कर रहे हो, आपने कोई भी अदर क्रॉप नहीं लगाई है. So season after season, year after year, you are only growing rice. That is monoculture. And monoculture is not followed generally because if you go for monoculturing, उससे क्या होगा? Soil fertility will degrade. ठीक है, soil fertility कम हो जाएगी और by time कुछ टाइम बाद क्या होगा? आपकी जो soil है वो infertile हो जाएगी and no other crop can be grown there. ठीक है, चलो. You're welcome, Isha. Welcome, Sugandha. Okay, Mayank, I have answered your query. See, yes, obviously आपका 40 मार्क्स का ARD का पेपर होता है, उसमें से
30 to 32 मार्क्स के आपके स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे, रेस्ट आपके 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो एआरडी करंट अफेयर के होंगे, ठीक है। तो एआरडी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा मत सोचना कि एआरडी करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो वो भी पढ़ना है आपने। ओके सो मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। योर वेलकम सोनियाल, you're welcome MR learner. Ma'am, relay last MCQ may after harvest the previous crop, but relay second crop is sown before the first crop harvest. ठीक है मैम, ओके। सी आकांक्षा, देर इज अ कंसेप्ट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक और कोई कंसेप्ट है, देखो रिले क्रॉपिंग में आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल क्रॉप कैन ऑल्सो बी सोन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्रॉप की सोइंग कर सकते हो, ठीक है, आप मल्टीपल क्रॉप की सोइंग भी कर सकते हो बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, क्लियर। सो वो भी सही है। ओके कमल सी, देखो फॉर डिपार्टमेंट तो आई वुड से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं यू हैव टू कवर देम, ओके, और द स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑन रूरल डेवलपमेंट, ऑल्सो मिनिस्ट्री रिलेटेड टू एलाइड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लाइक फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ से भी अगर कुछ भी है तो आपको वो कवर करना है, ठीक है। Okay, Mayank, most important topic for ARD is farming system, cropping pattern, seed and sowing, agronomy, soil and water conservation, plantation and horticulture crop, then forestry and agriculture extension. ठीक है, ये बहुत ही important कुछ chapters हैं, including animal husbandry and poultry. ये important chapter है to cover maximum, means अगर आपको कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाने हैं तो these are some most important topics that you can cover. Okay, Akansha. Okay, now I can see I have answered all the queries. So if you have any doubt, please let me know. Otherwise, please provide your feedback. ठीक है, I would like to hear from you कि ये classes कैसी चल रही हैं. So provide your feedback at feedback@edutap.co.in. This is the mail ID. Just after the session, you can just take out 5 minutes and write this feedback. Okay, that's all. मयंक, अगर आप एग्री बैकग्राउंड से हो तो यू शुड गो फॉर covering all the topics, I would say, क्योंकि for agriculture background students it's easier to cover the part of agriculture that is asked in NABARD examination. ठीक है, देखो मल्टी स्टोरीड स्पेसिफिकली तब यूज किया जाता है when different height of when crop of different height is grown together. ठीक है, वो स्पेसिफिक टर्म है व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग द वर्टिकल स्पेस और डिफरेंट हाइट की जो हम क्रॉप है उसको ग्रो कर रहे हैं। और मल्टी क्रॉपिंग क्या है? मल्टी क्रॉपिंग जरूरी नहीं है कि क्रॉप की हाइट डिफरेंट हो, क्रॉप कैन बी ऑफ सेम हाइट, ठीक है, एंड देन वी आर ग्रोइंग द क्रॉप, वो मल्टी क्रॉपिंग है। मल्टी स्टोरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, बट मल्टी स्टोरी तब स्पेसिफिकली यूज होता है जब आपने डिफरेंट हाइट की क्रॉप को ग्रो किया है। Vishal, yes, if you after these classes, if you just read summary sheet, they will be more than sufficient for now because you have less time. Okay, you cannot waste your time on going through each and every material. Cover summary sheet thoroughly, and that will be sufficient to score well in ARD. I'm not saying 100% will be covered, but yes, to get a good score, that will be sufficient. Okay, Mayank, you are not from agriculture background, you are from IT background. Okay, Mayank Saxena, then yes, you have to focus on important topics only. ठीक है, if you are from IT background, I would suggest you that if you do not have the course and you are doing self preparation, go and watch all the ARD static playlists that we have on YouTube. Most of your important topics will be covered from there. Okay. Mayank, yes, I totally understand. For IT graduates, it's difficult to cover agriculture because it's a very new subject for you all. But please, I would also like to tell you that previously, I think in 2023 or 2024, I cannot exactly remember,
one student who was from IT background cleared the IT specialist post, and he came to me and he said that, ma'am, I just covered your ARD static series and I was able to score well enough in my phase 1 examination. phase 1 के लिए ARD पढ़नी है, तो they will be helpful. Okay. Okay, Sugandha, you're welcome. Thank you so much. Okay, Mayank Bhaskar is asking. Yeah, your graduation is fine. See, for the generalist post, if you have done graduation in any subject, that is completely fine. Only the criteria that you have to meet is that you should have at least 60% in your graduation. And for PG, if you are applying from your PG degree, like you have the Agri Management PG degree, so you should have at least 55% total aggregate marks. Okay, that is completely fine. Okay. यस, NABARD एनुअल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फेज 1 फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू के लिए, तो वो अच्छे से कवर करनी है. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट टू आस्क? Okay. So with that, I feel I have covered all the questions, all the queries. So that's all for this session. I